किया अपने इस वेबिनार में एंड सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कोई वेबिनार या कोई सीरीज जो है वो किसी ने भी अभी तक ऑर्गेनाइज की है एंड विच इज़ अ वेरी वेरी पर्टिनेंट टॉपिक इन द करंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे सोशल मीडिया और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, जेन जी, teenagers or even minors, they are also using social media very extensively. और जितना से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नॉट ओनली ग्लोबली बट ऑल्सो पाकिस्तान में सोशल मीडिया का हुआ है, दैट उस हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेटली इसके ऊपर अवेयरनेस और इसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकी जितना कि ये टॉपिक डिजर्व करता है, बिकॉज all of this, the social media penetration, डिजिटल एक्सेस, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा एक मेंटल हेल्थ की फॉर्म में हमने देखे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव एक्सेस टू सोशल मीडिया, बट ऑल्सो कि हमने उनको प्रिपेयर नहीं किया दैट हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ अ टूल। बिल्कुल एक अनगार्डेड टूल की तरह हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। देयर वाज नो प्रेमोनिशन, देयर वाज नो ट्रेनिंग, देयर वाज नो हेड्स अप कि इसको यूज करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या फॉर्म ये इख्तियार करता है। ऑल्दो आई एम अ वेरी मच फैन ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दिस यूजेज एंड आई रियली रियली सपोर्ट, बिकॉज इसमें आपके बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिलती है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफ्यूज करने में आसानी होती है, बट इन द सेम टाइम जो रिपरकशंस हैं आई थिंक वी हैव टू एड्रेस दैट। और वो हम नहीं किया हमने अभी तक पाकिस्तान में, एंड आई आई रियली फील के एक इसके ऊपर नॉट सिर्फ एक वेबिनार इज नॉट इनफ, आई थिंक वी शुड स्टार्ट कैंपेनिंग or using the same tool, okay, how to use it effectively, how to protect yourself from being vulnerable on these social media, and how to use it in a way कि आप इसको maximize information और उसके through जो है वो आप अपनी अपनी knowledge बढ़ाएं, and don't fall prey to predators who are there and who are trying to look for such victims online. So उसके लिए ये वेबिनार इज वन ऑफ द सीरीज, बट आई थिंक कि हमें ज्यादा यंगस्टर्स और जो यंग बच्चे हैं उनको भी इंगेज करने के लिए कोई ना कोई स्कूल के अंदर कोर्सेज वगैरह करवाने चाहिए, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ करिकुला कि सोशल मीडिया को हमने किस तरह से यूज करना है, in the way that we also protect ourselves, in the way that we know okay, what are the legal frameworks, what are let's say mechanisms, helplines in place within Pakistan in case अगर आप कोई इस तरह के थ्रेट का शिकार होते हैं तो how do you manage it and how do you handle it. एक और मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोग जो एक सोशल मीडिया का इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ सरफेस, देन देयर इज अनदर black side to it which is called the dark web, which is even deeper level, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्राइम्स और ये सारी जितनी भी आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देन स्मगलिंग और ऑल दिस काइंड ऑफ डीलिंग, ड्रग डीलिंग, ये सारी चीजें, देयर इज अनदर लेयर टू द वेब इन सोशल मीडिया के अंदर भी एक और नेटवर्क है which इज नॉट accessible to like normal people, but sometimes it happens that these predators, they are mostly in that domain, and they try to victimize minors and other vulnerable groups on social media, और उनको ये लोग मैनिपुलेट कर करके अपने जो है वो उन्होंने अपने प्रॉपर बिजनेसेस बनाए हुए on the dark web, and a lot of people don't know about that, जिसके अंदर gaming and all those ill practices जो है वो हो रही होती है। और लॉट ऑफ मेनी टाइम्स एजेंसीज जो है वो उस नेटवर्क को ब्रेक करने की भी कोशिश करती है, बट दे आर सो entrenched और सो वेल पेनिट्रेटेड। इसीलिए मैं इस बारे में बात ओपनली करूंगी, एंड आई थिंक पेरेंट्स एंड ऑल दोज पीपल हु आर allowing their kids to use social media, गेमिंग भी आजकल बहुत ज्यादा लाइक डिजिटल गेम्स भी बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, फोर्टनाइट है, रोब्लॉक्स, a lot of such games are already there, जो कि 7-8 years onward जो बच्चे हैं they started to use it, और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिजिटल क्राइम, साइबर बुलिंग होती है।
और खवातीन का जो है वो और भी ज्यादा, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी वल्नरेबल ग्रुप, उनको भी ज्यादा हरासमेंट और उसकी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सामना करना पड़ता है. So it's a huge topic and I think I can go on and on. But before we start, हमें सबसे पहले तो एक जो दूसरी बात करनी होगी वो ये है कि what do we tag as cyberbullying या cyber let's say harassment. अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि वो they are being a victim of cyber harassment and it is offensible law by law. तो उसके लिए हमने कुछ जो कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं कि किस चीज को आप जो है वो साइबर बुलिंग या साइबर हैरासमेंट के तौर पर टैग कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉकिंग आ जाता है, डॉक्सिंग, ट्रॉलिंग, देन थ्रेटनिंग in worst case scenarios, you receive online threats, then public shaming, name calling, hate speech is also considered to be an offense. और उसके अलावा बुलिंग के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यूजुअली निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये this it does not fall into that, but actually these are all different forms of cyber bullying. और इसकी इतनी मतलब लेजिस्लेशन की बहुत ज्यादा जरूरत जब गवर्नमेंट ने फील किया कि देखिए क्राइम जो है वो ऑनलाइन क्राइम, क्योंकि the 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 predator is behind the screen and you cannot actually identify कि कौन है, so they are using this leverage and this of the screen and hiding behind the screen, that they think that they can do whatever in whatever capacity they can harass and bully people online. But उसी के लिए फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, especially in it's not just in the context of women, it's also in the context of minors as well. तो यहाँ पाकिस्तान में in case somebody has heard about this, इन्होंने प्रॉपर एक एक्ट पास किया नेशनल असेंबली में in 2016, जिसको हम पेका के नाम से पुकारते हैं. It's a very elaborative cyber crime act, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में ये नेशनल असेंबली में अप्रूव हुआ था. और इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि हम डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो कि मैंने 6-7 कैटेगरीज आपको बताई हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और परपेट्रेटर्स को जो है वो प्रॉपर प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको प्रॉपर जो है वो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की कैटेगरी में हम डालें कि कोई भी जो है वो इस किस्म के क्राइम का शिकार होता है, देन दे शुड हैव अ लीगल फ्रेमवर्क या सम काइंड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कि जहाँ पे वो जाके इसको रिपोर्ट भी कर सकें और उसके खिलाफ जो है वो प्रॉपर एक्शन भी हो सके. एंड इट्स अ वेरी ग्रेव क्राइम. अंडर इसके 2-3 सेक्शन जिसके अंदर आपको ठीक ठाक जो है वो, इफ यू आर प्रूवन गिल्टी, आपको अराउंड 5 to 7 years तक punishment and 5 million rupees का फाइन भी हो सकता है, provided that you prove it. Or it's a punishable act. Usually people dismiss it. People don't report it, but I would recommend कि अगर आपको बहुत ज्यादा पहली बात है कि इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि there is a protection act. और अगर आप if you are a victim then you should definitely report it, because यूजुअली साइबर क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते, उसकी वजह से जो है वो परपेट्रेटर्स को और ज्यादा शेयर मिल जाती है, देन दे कीप ऑन बुलिंग एंड कीप ऑन doing the same crimes over and over again. So under this ये कुछ जो हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो जेंडर यूनिट बनाया है, उसमें हमने सबसे पहले जो कंपाइल की है जेंडर बेस्ड वायलेंस की बुकलेट, जिसमें हमने सारे जितने भी हरासमेंट लॉज, पॉलिसीज, एक्ट्स, वी हैव compiled it in a booklet form. और उसके अंदर एक दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट के साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को आपने कैसे रिपोर्ट करना है. और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो इश्यूज कवर हो सकते हैं कि अगर आपको लेट्स से कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीजें आपकी
जो है वो प्रोपगेट कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोपगेट कर रहा है, दे आर थ्रेटनिंग यू, ब्लैकमेलिंग यू, हेट्रेड, हेट क्राइम, इन सब को these are all punishable acts, and if proven तो under the PICA legislative framework, you can you can end up in jail, or also the perpetrator can end up paying 5 to 7 million rupees. तो इसको हमने थोड़ा सा अंडर द 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म हमने प्रोपगेट करने की कोशिश की है कि हम जो है वो इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जेंडर बेस्ड बुकलेट में काफी और भी अदर लेजिस्लेशंस और एक्ट्स को हमने कंपाइल किया है, सो क्रिमिनल सॉरी साइबर क्राइम्स को भी इसी के अंदर हम कैटेगरी के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया है. सो इसके अंदर if someone is also like someone does not have any legal advice, let's say कि आप एक you are a victim and आपको अब पता नहीं है कि being a woman usually you are more you are not so open about sharing this kind of information with your family, और आपके पास usually access to lawyers भी नहीं होता. तो what we have done कि हमने under each case and scenario we have also compiled the lawyer's advice. कि let's say if you are you become a victim, now what is the next step to do, how to collect evidence, how to approach people, which helpline to call. अगर आप provincial department में किसी province में है, पंजाब में है, सिंध में है, तो इन provincial provinces के अंदर कौन कौन से हेल्पलाइंस है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, और किधर आप जो है वो ऑनलाइन लेट्स से अपनी complaint register करा सकते हो. So all of this information has been compiled in the gender GBV booklet compiled by the gender unit at the Planning Commission. So anyone who can access it and God forbid something happens, they know what exactly to do. और ये साइबर क्राइम्स का जो स्पेसिफिक सेक्शन है दैट इज ऑन द पेज 14, सो इट्स ऑल देयर. जो भी मैंने बात कही है, इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, यू कैन गो टू दिस बुकलेट ऑनलाइन व्हिच इज अवेलेबल ऑन द प्लानिंग कमीशन वेबसाइट, और उसके अंदर आप पेज 14 के अंदर ये सारी स्टेप बाय स्टेप कि इन केस आपके साथ ये हुआ है, स्टॉकिंग हुई है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है ऑनलाइन, स्पाई कर रहा है, वॉच कर रहा है आपका आपके लेट्स से आपकी आइडेंटिटी को वो कर रहा है, आपकी रेपुटेशन खराब कर रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, कॉल अ हेल्पलाइन व्हिच इज बेसिकली अंडर दी ये FIA के अंडर उन्होंने इसको साइबर क्राइम को रजिस्टर करवाया है. इट्स नॉट विद द पुलिस, सो मेक श्योर कि यू कॉल द राइट डिपार्टमेंट. FIA is the one who is looking after the cyber crimes. You can file a complaint on their website fia.gov.pk pe, and everything has been digitized, or you have to keep all the let's say evidences. And आजकल तो डिजिटल फॉरेंसिक्स इतने एडवांस हो गए कि in case the perpetrator deletes the evidence, you can still trace all those things back. अगर आपने एविडेंसेस रखे हुए हैं, कैन बी ट्रेस्ड बैक कि कहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, आईडी एवरीथिंग कैन बी ट्रेस बैक, डिजिटल कौन सी डिवाइस यूज हुई है, लैपटॉप से हुआ है, किस नेटवर्क के ऊपर उसने ये चीजें जो है वो प्रोपेगेट किए हैं, वो सारा कुछ जो है वो अवेलेबल भी हो सकता है, एंड द परपेट्रेटर कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस. So this is what I wanted to say, or I think this is a very grave topic. I was surprised to hear to read some reports that 7 out of 10 people who are on social media face some kind of harassment and cyberbullying and some kind of cyber harassment in their life. So this is a huge number, huge number. Uske andar we, especially being mothers, being one of the vulnerable groups, you have a lot of women out there who don't know how to handle this kind of situation. So unke liye it's very important that we propagate this कि social media को सबसे पहले आपने as a tool कैसे अपने आप को protected रखना है, and number two, how to utilize these जो legal frameworks already मौजूद हैं मुल्क के अंदर, इनको यूज करते हुए आपने कैसे जो है वो perpetrators को जस्टिस में लेकर आना है, और नंबर 3 के कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि साइबर क्राइम के अंडर फॉल करती हैं. So I think I have talked a lot.
And this is a topic that that can be discussed on and on, but I would like to hear from the participants what do they think. बस नहीं वो लिंक करके है इसे। जी, थैंक यू वेरी मच बरीरा, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, क्योंकि एज यू सेड कि ये वो टॉपिक है जिसपे इंफॉर्मेशन ही हमारे पास बहुत कम है, और वी डोंट फील कि एक तो कम है, और फिर हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमें तब हेरेस किया जा रहा है या हमारे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, और सेकेंडली फिर हम कहाँ जाके अप्रोच करें और कहाँ इसको करें। तो आई गेस के एज इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक, अगर आप इसमें मजीद कुछ और हमें ओरिएंट करना चाहें, मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि पेज 14 पर क्या क्या चीजें हैं। सो और फिर इसके मुताबिक साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर इंटरेक्टिव करके इसको हम ले जाएं तो और भी अच्छा हो जाएगा। सो इफ यू हैव That सम would be क्वेश्चंस। better because जी, maybe I have missed out on certain topics, ओके। क्योंकि ये अभी इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर हरासमेंट और उस तरह से बहुत ज्यादा केसेस लोग रिपोर्ट करते नहीं है, एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव कि क्यों नहीं करते, बिकॉज यूजुअली वी लाइक नो नो लेट इट गो, अनलेस कोई बहुत ग्रेव क्राइम हो, कोई आपको ओपनली थ्रेट कर रहा हो, कोई कोई आपको एक्सप्लिसिटली कोई आपकी चीजें इंफॉर्मेशन पब्लिक कर रहा हो। उसके अलावा कोई आपको, जाहिर है हेट स्पीच इज वेरी कॉमन ऑन सोशल मीडिया, जी, देन उसके अलावा नेम कॉलिंग, body shaming, all of this kind of harassment is over there. And the most critical thing is that people, even normal people who would not say anything, who are very decent civic citizens, even they sometimes lose their demeanor online. They are sometimes abusing, so because they know कि कोई भी इसको offensive नहीं लेगा, and people will dismiss it. हालांकि दिस इज अ वेरी पनिशेबल क्राइम एज पर द लॉ। सो द इशू इज कि हमने सबसे पहले इस बात को प्रोपिगेट करना है कि साइबर हरासमेंट के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं। किसी को ऑफेंसिव बात करना, किसी की हेट स्पीच किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिक माइनॉरिटी, एनी एनी ग्रुप, आप किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, एंड दे टेक दिस लिबर्टी of being expressing themselves on social media, and they commit crimes which are punishable and they are not aware of it. तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि हमने जो है वो अवेयरनेस फैलानी है कि these are a no go area. You can argue, you can express yourself, you can express your views on social media, most welcome, but staying within the boundaries, staying between the एक courtesy line, और एक आप उस लाइन को क्रॉस आप नहीं कर सकते इन एनी केस। सो और दूसरी बात ये है कि लोगों को इस लॉ का भी पता नहीं है कि इफ somebody is harassing you or hate speech create वो कर रहा है ऑनलाइन, it is a punishable act, and they can end up in jail and also end up paying a lot of fine. तो ये भी एक दूसरी अवेयरनेस की बात है। और तीसरी जो है वो विच आई वुड लाइक दिस प्लेटफॉर्म टू प्रोपेगेट, के प्लीज फॉर मदर्स, for all those parents, for even elder siblings, you should keep an eye on what your child or what your teenage siblings are doing on social media and what they are going through. Sometimes they don't share it, but मोस्टली जो टारगेट्स होते हैं साइबर क्राइम्स के वो यही माइनर्स होते हैं, और स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स में खवातीन हो गई, यंग बच्चे हो गए, और इनको they are not comfortable in sharing that as well, because eventually they feel that the burden will be on them, they will be held responsible. So you have to be very friendly in a very in a very not in a very bossy way. आप उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना लें कि they you should know that who they are befriending on their social media. पहले तो एक्सेस आप एक एज से पहले दे ही ना सोशल मीडिया की, और अगर लेट्स से आपने एक्सेस समहाउ हो गई है या दे आर ऑलरेडी देयर, दे शुड कीप एन आई, पेरेंटल कंट्रोल्स लगाएं अपने डिवाइसेस के ऊपर। उसके अलावा एक्सेस लिमिट कर दें, जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें, एंड विद इन टाइम लाइन्स उनको एक सर्टेन
ऑप्शंस देने के इससे इन बाउंड्रीज के बाहर उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करना। और अगर लेट्स से बहुत ज्यादा हाथ से जो है वो बात निकल गई, देन कीप अ स्ट्रिंजेंट आई ऑन व्हाट इज बीइंग डन ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। क्योंकि ये साइबर बुलिंग और हरासमेंट इवन गेम्स के अंदर भी आ गई हैं, एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। सो यू हैव टू कीप एन आई, एंड ऑल्सो आप अपने बच्चों की बिहेवियर को भी मॉनिटर करें। आर दे डिप्रेस्ड, डू दे फील लाइक आपको थोड़ा ऑफ लग रहा है, या समथिंग इज नॉट राइट अबाउट देम, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। So just keep an eye open के what's going on in their lives, so that you can have an idea कि social media और online उनकी जो एक let's say digital space, जो उनकी digital identity है, उसके अंदर कोई penetrate तो नहीं कर रहा, कोई उनको bother तो नहीं कर रहा। So this is my advice that I would like to give to everyone. एंड आई विल एड ऑन टू दैट बरीरा कि जो हमारे बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं अब कुछ थोड़ा सा प्रिवेसी वाला, और जो हम पेरेंट्स ने लिबर्टी दी है, क्लोज द डोर्स। तो वो जब डोर्स क्लोज होते हैं और हम उनके रूम्स में नहीं इंटरफेयर करते, और हम बहुत ज्यादा स्पेस भी दे रहे हैं, सो आई एम नॉट सेइंग कि स्पेस नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ये है कि इस पे मजीद चेक रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे कब उठते हैं कब सोते हैं, लाइक लाइफ पैटर्न ही बिल्कुल चेंज होके रह गया है इस वक्त जो मैं देखती हूँ। हम जब छोटे थे तो हम एक कमरे में चारों बहन भाई सोते थे, और अब हर बच्चे का अपना अपना बल्कि हमने खुद एज अ पेरेंट बच्चों को एक बहुत छोटी एज में अलग कर दिया। सो वो जो एक कनेक्शन और बॉन्डिंग है वो भी थोड़ी सी लैक करती है, मेरा ख्याल पेरेंट और चाइल्ड में। और दूसरा ये है कि उस पर चेक कैसे रखना है वेरी स्मार्टली, क्योंकि बच्चा इतना हमने कॉन्फिडेंट कर दिया है कि वो ये कहेगा कि दिस इज माय प्राइवेट बिजनेस। तो जिस तरह बरीरा ने कहा कि जी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से उससे इस पे आए रख सकते हैं बच्चों पर कि जी वो क्या कर रहे हैं। और बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि एक सर्टेन एज तक आपको सोशल मीडिया तक एक्सेस बच्चों को कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, और कुछ टाइमिंग्स रखें जो कि आपकी प्रेजेंस की, आप मतलब यू शुड बी अराउंड किसी भी तरीके से, ताकि बच्चा जो है वो ये भी ना फील करे कि जी मुझ पे मॉनिटरिंग हो रही है, सुपरविजन हो रही है। या फिर हम इतनी स्पेस दें कि हम बच्चों को उतने करीब अपने ले आए, विच इज अगेन एज अ पेरेंट और चिल्ड्रन। मेरे अपने दोनों बच्चे कहते हैं अम्मा ये सारी बातें पेरेंट्स के साथ नहीं की जाती। यार आई एम योर फ्रेंड, बट आपस में तो शायद कर लेंगे, मुझसे नहीं करेंगे। तो वो एक जो जो एक रिस्पेक्ट का या एक थोड़ा सा फियर का जो एलिमेंट है बच्चे में और पेरेंट में, वो नहीं गायब होगा। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इतने ओपन होंगे। सो यू शुड बी विजिलेंट कि हम इन चीजों को देख सकें। ये साथियों में से कुछ आप ऐड करना चाहें, या अपनी कोई मतलब तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस, या कुछ पूछना चाहें बरीरा साहिबा से। मेरा ख्याल सजाद मिस नकवी कुछ पूछना चाह रही है शायद। प्लीज अनम्यूट। जी डॉक्टर नासरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुबीला। वालेकुम अस्सलाम, पूछे ना यार। हाँ जी। मैंने कहा कोई क्वेश्चन आप, या यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस साइबर बुलिंग और ये सारी चीजें जो अभी बरीरा साहिबा ने बताई हैं। I will I will not now, but I will ओके later on. I will ask ओके the questions. ओके ओके। जी और कौन से साथी चाहते हैं कि कुछ पूछे? सजाद, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं एक्चुअली जब आप ये बात करी थी साइबर ये टू बी फ्रेंड एंड ऑल, अगर एक सर्टेन एज तक आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। गूगल का अपना पेरेंटल कंट्रोल का है, आप अपने बच्चों के डिवाइसेस के ऊपर वो लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वेबसाइट एक्सेस की है। और सेम गोज फॉर एप्पल, एंड्रॉयड, और जो आपके एप्पल डिवाइसेस है उन सब के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल है। सो आइदर यू कैन यूज मेक your kids realize that they are supposed to
give access and parental control है, and they have time slots and they have limitations on access. लेकिन अगर let's say बहुत आपके your kids are grown up and they don't want to have this kind of intrusion in the privacy, then of course you have to keep a subtle eye on them. It's not like about you should try to befriend them and talk to हम्म them, हम्म and maybe make friends with them on social media as well, ताकि हम्म आपको पता चले कि उनके नेटवर्क में कौन कौन है, क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या जो है वो हु इज देयर इन हिज और हर नेटवर्क. सो ये हम्म भी एक दिस इज अनदर वे ऑफ कीपिंग एन आई एज वेल कि एक्टिविटी सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रही है. और उसके अलावा जो और भी अब देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ सोशल मीडिया के यू कैन नॉट एक्चुअली कीप अप. इट्स बियॉन्ड फेसबुक एंड इंस्टा नाउ. अब हम्म every day there is a new social media which I think it's very hard to keep up with that. बट आई थिंक कि उसके ऊपर भी टॉप जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल वो ये है दैट यू बी फ्रेंड योर चिल्ड्रन, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट देन समबडी एल्स विल, and जी that can actually create a problem for you. और especially जो pre-teens और teenage girls होती हैं या teenage बच्चे होते हैं, they are already going through a lot of hormonal changes as well. So during that time, either if you don't feel कि आप वो relation नहीं बना सक रहे हो अपने बच्चों के साथ, then you can ask some family members maybe, or someone that the child is close to, लाइक योर ओन सिस्टर, या जिस तरह बच्चों का खालाओं के साथ बहुत एक बॉन्ड होता है, या मामों के साथ होता है, या चाचों के साथ होता है, तो एक एक आप ऐसा एलिमेंट रखें फैमिली में जो कि यू कैन कीप डिस्कसिंग विद देम एंड एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन, और जिनमें एज गैप भी ना हो, बिकॉज आई थिंक जनरेशन गैप इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग it's very hard for us to keep up at pace with them, because if you talk to Gen Z, they are completely different in a different paradigm. और हम लोग हमारी जो brought up था वो extremely different उसमें हुआ है. So there is a huge generational gap, or that is widened because of this technology evolution as well. कि जो थोड़ा बहुत जनरेशनल गैप पहले था, उसको मजीद टेक्नोलॉजी के की वजह से और भी ज्यादा वो वाइडन हो गया. सो anyone who was born 5 years ago, या 5 साल का गैप भी जो है वो अब 10 साल 20 साल के बराबर हो गया, क्योंकि 5 साल में इतनी चीजें चेंज हो गई हैं. द वे वी टॉक, द वे वी कम्युनिकेट, द वे वी नेटवर्क, even social media की evolution. Every day there is a new platform, every day there is a new game, every day there is something new on social media. कि अब keeping up with that is getting very hard for old generation. So the best way is to keep your bond strong with everyone in the family, especially parents of mothers of women, mothers of minors, जो कि अभी छोटे हैं. They are very vulnerable and susceptible to cyber crime. So I think there are several other ways other than being very controlling and very uh, आप उनके ऊपर बहुत stringent eye रखने की बजाय, there are other ways to bond with them, so that you can know कि if something happens, you should be the first one they can come to, and you should be इतना आपका होना चाहिए bond के if they are going through something, you should be the first one, and they should not fear you, but they should trust you with that that they will not be held responsible for that. So this is the kind of bond that I think can save this, and sort of uh, जो हमारा जनरेशन गैप है उसको ब्रिज करने का यही तरीका है फिलहाल. जी वेरी वेल सेड. बिल्कुल आपने में दुरुस्त फरमाया कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बच्चा किसी और के पास जाने से पहले आपके पास आए और आपको बताए कि उसके साथ व्हाट इज हैपनिंग टू हिम और हर. और मदर के साथ भी हो सकता है, भाई बहन के साथ भी हो सकता है, घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकता है. बट बेटर ये बिल्कुल. है कि मदर फादर के साथ भी हो सकता है. तो इसको बिल्कुल. इन इन रिलेशनशिप्स को फैमिली के अंदर स्ट्रांग होने की और एक दूसरे के करीब होने की बहुत जरूरी है. और उसके लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जब आप वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेट करेंगे तो जारी बात है, जब आप खुद कम्युनिकेट करेंगे तो आपका बच्चा भी आपके साथ जरूर कम्युनिकेट करेगा. सो बिल्कुल. और कुछ साथी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें. अनीस, आप यू आर आईटी पर्सन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया.
अगर आप साइबर बुलिंग के मुतालिक कोई चीज पूछना चाहें या आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। Yes, I think we would like to hear from experiences. और अगर यस, ताकि अगर हम लोग एट प्लानिंग कमीशन कोई पॉलिसी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, if there is any recommendation, you're most welcome to pitch in because we want to hear from the audience as well, um, so that we can govern better, let's say. हाँ, अच्छा उसमें तो जी अनीस आप कुछ बोलेंगे या मैं? जी अनीस, अनीस इज सेइंग दैट ही कांट हियर एनीथिंग। अनीस आपको हमारी आवाज नहीं जा रही? बाकी साथियों को आई थिंक वी आर ऑडिबल, आई गेस। हाँ, आपके हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू है, ये सेइंग, ये जस्ट इट्स ओके नाउ। जी अनीस आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, उसके लिए बरीरा जी मुझे ये लगा जब अभी आपने कहा कि वी शुड कंट्रीब्यूट एंड गिव सम आइडियाज, जब आप प्लानिंग कमीशन में पॉलिसी लेवल पर अभी काम कर रहे हैं, सो यू विल इनकॉर्पोरेट इट। सो आई गेस के हम आफ्टर दिस 16 days ऑफ एक्टिविज्म वी विल सिट विद यू एंड वी विल प्लान अ सेशन इन अ वे कि आप ऑनलाइन जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे कुछ पॉइंट्स ले सकें। व्हाट बिल्कुल, डू यू से? बिल्कुल, ठीक है, जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स करते हैं, तो वी विल ट्राई कि हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप कर लें और बिल्कुल, उसमें आप फोकस टू दिस साइबर बुलिंग। इफ यू फील दैट यू नीड सम experiences or points from the civil society, from any person, any citizen of Pakistan, ठीक है? तो बल्कि मैं आज हम वी वर इन इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड यू वोंट बिलीव कि ऑडिटोरियम में कोई 150 बच्चियों के बाद भी the students were coming and there was no space, more space to accommodate them. So I guess that the platforms like these, जहाँ पे बहुत ज्यादा हमें ये डिसमिनेट करने की जरूरत है ये तमाम बातें, तो वी कैन थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। हम आपका किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार ही रख सकते हैं इन विच यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एंड दे विल गिव यू द आइडियाज। और लाइक आज भी बड़े अच्छे उन्होंने इंटरेक्टिवली हमारे साथ सेशन जब हमने किया, so they gave us some points कि जी इनको हम, it was based on role of youth to to combat gender based violence। तो बहुत से ideas आ जाते हैं। so we will talk inshallah and we will have a meeting about that। जी और कोई I साथी think कुछ है? हमें जी जो while the audience is prepping up for the questions, मुझे दो चीजों के ऊपर बहुत I think that it just came across के we should include social media literacy in our curricula from the श्योर। very beginning. फिफ्थ हम्म सिक्स क्लास से आप इनको सेंसिटाइज करना शुरू कर दें कि हाउ टू इफेक्टिवली यूज सोशल मीडिया फॉर योर गुड एंड नॉट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ हरासमेंट। और बिल्कुल। नंबर टू ये कि हमें केस स्टडीज थोड़ी सी देखनी चाहिए, एनोनिमस केस स्टडीज, मे बी लुक एट सम ऑफ ऐसी सक्सेस स्टोरीज की जिसमें परपिट्रेटर्स को जो है वो प्रॉपर जस्टिस पे लाया गया एंड दे वर फाइन एंड दे वर पनिश्ड। सो ऐसी केस स्टडीज को अगर हम कैंपेनिंग के थ्रू एंड इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स में हम एज अ सक्सेस स्टोरी यंगस्टर्स के बीच में हम ये बात करें कि यू नो दिस इज a punishable act and if you're a victim don't let the perpetrator go away, get away with it. So I think that will also encourage them to report on such kind of issues as well. और ये आप सोचें कि ये तो बहुत मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, लॉट ऑफ women don't report on physical violence, हम्म प्रॉपर उनके लाइक आई हैव सीन केसेस कि जिसमें उनके हड्डियां टूटी भी होती हैं, उनके मुंह पे निशान होते हैं, they have all the evidence, they going through that pain for a couple of years but they don't report that. तो it's very hard for us to expect कि वो साइबर क्राइम्स और इस तरह की चीजों को जो कि डिसमिस हो जाती हैं बहुत आराम से, तो इनको रिपोर्ट करेंगी। सो दिस इज समथिंग दैट एटीट्यूड चेंज की जरूरत है कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एंड देयर आर लॉज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड मतलब लॉज अगर आप यूज एक्सरसाइज नहीं करें then there is no हम्म point in having them. The main objective of having laws is to give protection to those groups who are vulnerable. So हम्म yeah,
थोड़ा सा एम्पावर्ड करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनको अवेयर करें और शुड पुट दिस थिंग ऑन द टेबल दैट दिस इज एन ऑप्शन. If you feel like कि बस हो गई है, then you should exercise that protection as well. बिल्कुल आई एग्री. डॉक्टर मेहर अख्तर का हैंड रेज्ड है. आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा. वीडियो ज्वाइन करना ऑन करना चाहें जरूर कर दिए. बट आई विल जस्ट ऐड ऑन कि आज उन 150 बच्चों में से मैंने जब पूछा कि किसी को प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का किसी को पता है, एक बच्ची ने बताया कि उसको मालूम है. सो जो एक गैप है हमारा, जिस तरह आपने कहा कि मेरा तो जिस तरह मैं कहती हूँ कि शायद पूरा सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज को भी बिल्कुल बचपन से हमें बताना चाहिए, साइबर बुलिंग को बताना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी हमें बिल्कुल शुरू से बताना चाहिए. तो ये वो चीजें हैं कि जो हम मोटी मोटी, मेरे जमाने की या मुझसे भी पहले के मेरे पेरेंट्स के जमाने का जो सिलेबस है और वो अभी तक चला आ रहा है, तो उसको रिवाइज करने की एचईसी को बहुत ज्यादा जरूरत है. और ये तमाम चीजें हम एग्जिस्टिंग जो इश्यूज हैं उनको अगर हम सिलेबस में डालेंगे तो द जनरेशन दैट विल कम अप आफ्टर 10 to 15 years, होपफुली दे विल बी मच, हालांकि हालात फिर बदल चुके होंगे, फिर एक और चैलेंज होगा, बट एटलीस्ट दे विल बी रेडी एनफ जो कि उस वक्त जो है उस चीज का मुकाबला कर सकें. जी डॉक्टर मेहर अख्तर. जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत ही वालेकुम अच्छा अस्सलाम. लगा. इट्स वेरी गुड टॉपिक और बहुत ही इस वक्त नीड है इसकी. तो मेरा तो 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्टर ऑल्सो. मैंने गायनोकोलॉजिस्ट भी शुरू से चीज़ें देखी हैं. और जब सोशल मीडिया आया है तो पिछले 10 साल से तो मैं इसमें, एंड आई बीन चेयरपर्सन ऑल्सो ऑफ वॉर अगेंस्ट रेप. फिर हमने बहुत सारा काम किया टू पास द लॉ ऑफ एविडेंस. तो एनीवे, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया ना, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो गैप है इस वक्त वो अवेयरनेस का है. जब व्हेन एनी पर्सन गोज थ्रू साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट, तो उनको पता नहीं होता कि किसको सबसे पहले एक्सेस करें. अब मेरे साथ तो ये है कि मुझे लोगों को मेरा पता है, मुझे पता है, तो कुछ लोग मेरे रेफरल के थ्रू मुझ तक आते हैं, कोई डॉक्टर्स के थ्रू जाते हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के थ्रू जाते हैं. लेकिन ये जैसे बरीरा ने कहा ना कि हमें इसे एक उसमें इम्पोर्टेंस है कि हम सिलेबस में शुरू से इसको पढ़ाएं कि ये सब क्या होता है. और हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते थे तो वो भी हमारे उससे निकाल दी गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे प्राइमरी स्कूल सिलेबस से. लेकिन अब ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ की उसमें अवेयरनेस देनी चाहिए. दूसरे जो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के वो कर दूं कि जैसे हम डॉक्टर्स हैं ना, तो हमारे सिलेबस में भी अभी ये सब चीज़ें शामिल नहीं थी, जेंडर बेस्ड वायलेंस और ये सारी चीज़ें. तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने सिलेबाई को, जैसे आपने कहा भी अभी जो आप कह रही थी कि ये ज़रूरत है कि वी नीड टू रिवाइज द सिलेबस. लेकिन मैं बरीरा की एक इनपुट लेना चाहती हूँ कि जो उनका इंटरेक्शन हुआ है डिजिटल राइट फाउंडेशन से, फिर उनकी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं और उससे क्या कुछ उसके बारे में मुझे बताएंगी. क्योंकि मैं तो 20 साल से देख रही हूँ कि वो तकरीबन 15-20 साल से, तो they have been able to develop something, but we need more awareness and we need more access to people, especially of women and girls, to these facilities, जो कि अभी हमारा फुलफिल नहीं हो सक रहा है. ये मसला है. सॉरी, जी आपने किस बरीरा. इदारे की बात की डॉक्टर मेहर? आप डिजिटल किसकी बात? राइट्स फाउंडेशन जो है, डिजिटल राइट्स का जो वो भी है, यानी एक इदारा है ना, निगत दाद उसकी जी जी फाउंडर. जी जी, बिल्कुल जी जी बिल्कुल. जी. निगत साध हैज डन उनकी अमेजिंग जॉब. साइट्स भी, उनकी वो वेबसाइट भी है जो आप जिस पे कंप्लेन या एक्सेस टू सर्विसेज कर सकते हैं. उससे क्या एक्सपीरियंस रहा या उसका कुछ पता है?
I know Nigartar, and she's been working in this domain for quite some time now. And it's a CSO organization. It's an NGO. So I really मैं as a government from government perspective बात करूंगी कि जिस तरह being the government, हम government ने क्या initiatives लिए हैं, तो उसके अंदर ये act है, FIA की proper complaint cell है, और उसके numbers में इंशाल्लाह I'll try to get them कि क्या rate है reporting का and all. I will try to get those numbers, and inshallah in the next webinar I'll also try to quote them. So complaint.fia.gov.pk पे प्रॉपर इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर आप साइबर क्राइम्स को या साइबर बुलिंग और इस तरह के इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर के 2016 ऑनवर्ड्स काफी अभी तक इनके पास केसेस होंगे. बट देन अगेन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि साइबर के ऊपर को साइबर हरासमेंट और इसके ऊपर कोई इतने हमारे पास केस स्टडीज नहीं है कि जिसमें परपेट्रेटर्स को जो है ना प्रॉपर आप जस्टिस में ला सको. सो आई विल आल्सो लुक इनटू सम केस स्टडीज कि हम डेवलप कर सके, क्योंकि वही बात है कि जब आपके पास एक सक्सेस स्टोरी होती है तभी बाकियों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी मिलती है, एंड दे आल्सो नो हाउ टू एक्सरसाइज दीज प्रोटेक्शन लॉज एंड हाउ टू यूज दीज टूल्स एंड हेल्पलाइंस. जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये पनिशेबल ऑफेंस है और आप इसको फाइट कर सकते हैं, आप इसको अगले बंदे को जस्टिस उनको आप इसका सजा भी दिलवा सकते हो, तो दे जस्ट ब्रश इट अंडर द कारपेट, राइट? तो I will also try to get the numbers from this FIA कि ये tool और जो complaint cell है how successful it was, और whether awareness और उससे ये इसका usability जरा बढ़ेगी या नहीं. थैंक यू बरीरा. किसी और साथी का कोई सवाल है? चलें, अगर if anyone is not asking anything, तो मेरा ख्याल we will go for the wrap up. मैं बरीरा आपका बहुत ज़्यादा पर्सनली भी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से अपने बोर्ड और अपने मेंबर्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. प्लानिंग कमीशन SDG यूनिट से बहुत अरसे से हमारा एक कोऑर्डिनेशन रहा, और एवरी टाइम you people responded positively. वेबिनार्स भी किए, सेमिनार्स भी किए, ट्रेनिंग में भी आप लोग आए. और मेरा ख्याल है कि हम लोग मिलकर जो 2030 का एजेंडा है SDGs का, उसको एड्रेस करने के लिए एक इंक्लूसिव एफर्ट की ज़रूरत है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है. सो वी आर ऑलवेज देयर, और वी विल ट्राई कि हम आपको दोबारा ले सके इंशाल्लाह. आप तमाम साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें जूम पर ज्वाइन किया और फेसबुक पे ज्वाइन किया. हमारी ये रिकॉर्डिंग फेसबुक पर भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी हम अपलोड इसको कर देंगे. सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप इसको खुद भी देख सकते हैं और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज जी. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.